self-splicing introns reveal that RNA can catalyze RNA splicing. There are total 3 classes of splicing found in the cells. These are nuclear pre-mRNA, group 2 introns and group 1 introns. Thus far, we have dealt only with the nuclear pre-mRNA splicing that is mediated by the spliceosome found in all the eukaryotes. The so-called group 1 and group 2 are self-splicing introns. By self-splicing, we mean that the intron itself folds into a specific conformation within the precursor RNA and catalyzes the chemistry of its own release. So the RNA introns itself release them from the mRNA. No any other external spliceosome or external proteins are required. In terms of a practical definition, self-splicing refers to introns that can remove themselves from RNAs in the test tube in the absence of any proteins or other RNA molecules. So self-splicing means कि अगर हम इस mRNA को pre-mRNA को अगर हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और इसमें कोई भी हम एडिशनल फैक्टर और एडिशनल प्रोटीन नहीं डालते तो ये इंट्रॉन्स सेल्फ स्प्लाइस कर लेंगे, खुद ही अपने आप को उस mRNA से रिमूव कर लेंगे. The self-splicing introns are grouped into 2 classes on the basis of their structure and splicing mechanism, and these 2 classes are group 2 introns and group 1 introns. Strictly speaking, self-splicing introns are not enzymes because they mediate only one round of RNA processing, and if we say कि ये enzymes हैं तो इसका मतलब है वो एक राउंड ही तो ना प्रोसेस करें, क्योंकि एंजाइम्स तो हैं सेवरल रिएक्शंस कैटलाइज कर सकते हैं, बट दीज कैन ओनली प्रोसेस वन राउंड ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग. In the case of group 2 introns, the chemistry of splicing and RNA intermediates produced are the same as those which are produced in case of nuclear pre-mRNAs. For example, the intron uses an A residue within the branch site to attack the phosphodiester bond at the boundary between the 5' end and the end of the 5' axon, that is at the 5' splice site. So as you have seen in case of spliceosome mediated splicing, वहाँ पे जो है A जो है वो ही एक्ट कर रहा था 5' स्प्लाइट साइट पे अटैक करने के लिए, और इस केस में भी ये जो A न्यूक्लियोटाइड है ये ही अटैक करेगा उसी साइट पे जैसा कि उस केस में आपने देखा था. This reaction produces the branched laureate and is followed by a second reaction in which the newly freed 3' OH of the axon attacks the 3' splice site. So in this way, releasing the intron as a laureate and fusing the 3' and 5' axons. So अगर आप को याद हो तो ये सारा सीक्वेंस जो अभी मैंने डिस्क्राइब किया ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि न्यूक्लियर प्री mRNA स्प्लाइसिंग में होता है. यानी कि पहला स्टेप जो है ए अटैक करता है 5' स्प्लाइस साइट पे, दूसरा स्टेप जो है उसमें ये जो 5' एंड फ्री हुआ है ये अटैक करता है 3' स्प्लाइस साइट पे, और तीसरे केस में जो है ये इंट्रॉन रिमूव होता है और ये दोनों एक्सॉन्स जो हैं 5' एंड से और 3' एंड से ये दोनों एक्सॉन्स जो हैं ये ज्वाइन हो जाते हैं. सो दीज 3 स्टेप्स दे आर वेरी सिमिलर
to the nuclear pre-mRNA splicing. So this is the comparison of all the three types of splicing. So this is pre-mRNA spliceosome. So you know how this takes place. And this is the group 2 self-splicing. So in case of group 2 self-splicing, this is A. 2' hydroxyl of A attacks the 5' splice site. This bond is broken, phosphodiester bond is broken, and then this attacks 3' splice site, and this laureate is relieved and 2 exons are joined. So in case of group 1 self splicing, यहाँ पे आप देखें कि A जो है वो नहीं है, इसका मतलब है A की जगह पे यहाँ पे G है और बाकी सब कुछ वैसे ही है. G जो है वो 5' पे अटैक कर रहा है और फिर ये जो फ्री हुआ है 5' ये 3' पे अटैक कर रहा है, और इस तरह से ये जो है एक mRNA विच इज लीनियर mRNA, ये लॉरिएट इंट्रॉन नहीं है बल्कि ये लीनियर इंट्रॉन है. ये रिलीज हो गया और ये 2 एक्सॉन्स जो हैं ये ज्वाइन हो गए. तो ये जो है ये फिगर तीनों स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म्स का कंपैरिजन शो कर रही है.